Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today we will discuss a new chapter of PPC which is related with general exceptions, and it starts from section 76 onward section 95. General exceptions means exemptions from general criminal liability on the basis of certain justifiable grounds. Means इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से बंदे जो हैं वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्टेड हैं और किन किन ग्राउंड्स की बिना पर हैं. तो ग्राउंड्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, on the basis of belief, information and knowledge of a person. So they are exempted from criminal liability towards certain offences based on certain justifiable grounds. They are excusable, but they are excusable on the basis of certain grounds. So let's discuss section 76. Section 76 deals with act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. Section 76 says nothing is an offence which is done by a person who by the reason of mistake of fact and not by the reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. Before starting this section, let's understand this. Mistake of law जो है वो हमारे पास कभी भी justifiable नहीं है. Mistake of law is never justifiable, it's never excusable, while mistake of fact is justifiable and excusable. According to famous maxim, ignorantia facti excuses, which says ignorance of fact is an excuse. That means mistake of fact is justifiable, कि mistake of fact जो है वो हमारे पास excusable है. While the second maxim which deals with ignorance of law, that is ignorantia juris non excusat, that means ignorance of law is no excuse at all. That means mistake of law is never justifiable, it's never excusable. So let's move towards the essentials of section 76. So the first essential of section 76 is एक्ट जो है, जो भी एक्ट कमिट किया गया है, इट शुड बी डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हो. एंड सेकंड, इट मस्ट बी डन इन गुड फेथ, कि वो गुड फेथ में किया हो विद ड्यू केयर एंड अटेंशन. एंड थर्डली, इट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कि ये उस बंदे ने किया हो जिसको ये पता हो कि वो ड्यूटी बाउंड है बाय लॉ टू डू दैट वर्क, ही इज़ अंडर ड्यूटी टू डू दैट वर्क. So let's understand this with simple example. A जो है वो एक सोल्जर है. A is a soldier. A क्या करता है? वो फायर करता है एक मॉब पर. अब मॉब हमारे पास क्या होता है? मॉब हमारे पास एक क्राउड ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक हजूम होता है. अब ए ने क्या किया? मॉब पर फायरिंग स्टार्ट कर दी. और ए ने ये फायरिंग क्यों की? बिकॉज ही वॉज गिवन ऑर्डर बाय हिज सुपीरियर ऑफिसर. उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसे ऑर्डर दिया था in conformity with the commands of law. Commands of law means jurisdiction of law. Law की jurisdiction के अंदर रहकर उसने उसे ये ऑर्डर दिया था. तो यहाँ पर A has committed no offence. A के ऊपर कोई भी liability नहीं आएगी because he is exempted from general criminal liability on the basis of justifiable ground. So A will not be liable for this act because he has done in jurisdiction of law and on the commands of his superior officers. So this is all about section 76. If you have liked the video, please comment below.